Guys, welcome to my channel. This is my daddy and this is my mummy. And it's very sunny, so I'm playing with my 12 friends at the beach because it's really sunny. So we packed it all day. So it's really sunny, as you can see. I said that already. And I'm already ready and my mom's ready. They're both the same. And let's go. And bye-bye. Today, I'm going to the beach. We have lots of things to eat and we are going to swim when we reach there. And we have so much food to eat. And my friends are going to come too. Would you be my guide or just let me stray? Would you understand or just turn me away? We are one of the same, so every day put your hands up, hold your head high. We are better all together if we only try. Lift up your voice, let's make some noise. We are better all together if we only try. Put your hands up, hold your head high. We are better all together if we only try. Lift up your voice. को एक बहुत ही खूबसूरत बीच पे लेके जाने वाला हूँ। आज का जो टेम्परेचर है बहुत ही शानदार है और आज का डे इसलिए शानदार है क्योंकि मेरे साथ मेरे 3 और फ्रेंड्स आ रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ और भी मज़ा आने वाला है बिकॉज़ बहुत सारा जितने ज़्यादा लोग हैं उतने ज़्यादा ऑब्वियसली मज़ा आएगा और बच्चे अपना एंजॉय करेंगे और वाइफ अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेंगी और हम लोग अपने फ्रेंड्स जो मेरे साथ फ्रेंड्स हैं हम सब टेनिस पार्टनर्स हैं, रोज़ हम टेनिस भी खेलते हैं इसलिए आज और मज़ा आने वाला है और बीच ऑलमोस्ट 6 माइल्स दूर है अभी और कैन यू शो देम अराउंड कितना खूबसूरत इलाका है ये देखो जैसे ही बीच आने वाला होता है वहाँ पे एकदम जो लैंड रहती है एकदम स्मूथ एकदम प्लेन एरिया आ जाता है So this is the farm. This whole thing is the farm, but when we come, but it's sand over here, and it's beach sand. So it tells us we are nearly through the beach because it has lots of sand in the grass and so much the sand, and they are mixed together with bodies. मिक्स टुगेदर विद क्या बोला हाँ कई लोग गंदा अपना डॉग पॉटी साफ नहीं करते हैं है ना दे डोंट पिक अप डॉग पॉटी इसलिए कई जगह गंदगी भी होती है बट शी इज राइट बट इट्स फिश पॉटी टू हाँ थोड़ी बहुत वो भी होती है और थोड़ा सी एनिमल्स भी होते हैं ड्रैगन snake dragons lots of things and sand is very important and lake is very important so if there was no lake for the sea animals they would just die and then we would have nothing no animals that was in sea so that's why we always keep water we never
ये मैं स्पेशल चाय अपने घर से बना के लेके आया हुआ था, सो दैट मुझे चाय का तलब जो है जब भी लगे गाड़ी में तो पी ली जाए। मज़ा आ गया ड्राइव करते हुए, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे पार्क इसके लिए लाइन में लगे हुए हैं, पार्किंग वाली। 10-15 मिनट हो गए हमें, हमने एक कप चाय मार ली है, मज़ा आ गया। और मेरा बच्चा खुश है अभी, लेकिन अभी अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहा है जो कि इसको अभी मिलने वाले हैं। उत्तर, आर यू एक्साइटेड टू सी बीच? Yeah, and all of my friends are there, like my dad said. And his friends that he always plays tennis with in Walton Park, there too. And their wives are never at Walton Park, but the kids and the dads are always there to play tennis and play in the park. But the mums are just at home, so today all of the mums are there. So yeah. And there's crew in the sun. जिसके लिए हम इतनी दूर से ड्राइव करते हुए आए थे, और अभी हम आपको बिल्कुल ही क्लोज व्यू जो है बीच का दिखाने वाले हैं। आई थिंक इस साइड में जगह नहीं है, मैं किसी दूसरे साइड पे जाना पड़ेगा। I love this. कितना सुंदर बीच है यहाँ पे, जहाँ पे हम आए हैं, दूर दूर तक फैला हुआ है। अभी हम पानी के पास जाएंगे, जो यहाँ से टाइड जो है वो दूर चली गई है यहाँ से। मॉर्निंग में बिल्कुल यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे पानी होता है। अभी ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर तक पानी जा चुका है, और यहाँ पे पूरा बीच जो है जो फुल हो रखा है, वो देखिए। स्टार्टिंग से लेके वहाँ से हमने एंट्री करी थी, यहाँ से लेके लोग पूरा पिकनिक बनाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। सब फैमिलीज़ यहाँ पे सन का नज़ारा लेती हुई। और यहाँ पे आपको मेरी बेटी ने यहाँ पे कुछ जेली फिशेस देखी हैं। एजू, ओह माय गॉड, आप मुझे दिखाइए कि आपको यहाँ पे क्या मिला है। ओह या, दिस इज जेली फिश। ओह माय गॉड, ये इनकी टेल होती है क्या? ये जेलीफिश की टेल है, ये वाली? ओह वाह, नहीं तो No, every jellyfish is around. ओह यस यस, ये मेरी You like it? यस, Nice. you're looking like an abs girl today. Because I am. I always have abs. चॉकलेट खा के आए हैं? I eat chocolate. ये आपने सीखा किससे है? वाओ, दैट वाज सो कूल। अब मुझे ऐसा करो, 3-4 करके इकट्ठे ही करके दिखाओ। वाह, आपने तो बहुत अच्छा सीख गए हो। मुझे आप सिखाओगे बाद में? अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि ये करते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप बताओगे? Yeah, I can show you. ओके। So first, you have to do this pose. Or a handstand pose. And then I'm going to go into this pose. So, do this. वाह, Just jump. And then boom, I'm done. स्प्लिट कर रहे हो? अभी स्प्लिट करके दिखाओ। फुल स्प्लिट, आई वांट फुल स्प्लिट। Full split. Okay. Look. Ta-da! Nice. What about? Can I show you cartwheels again? Yes, please. Sure. Daddy, you get a fight. चलो डांस। Okay, I'll just cartwheel again. Go into this pose. फाइनली हमने बीच के पास बिल्कुल आ गए हैं, और अभी थोड़ी देर में यहाँ पे हम स्विमिंग करने वाले हैं। और कितना शानदार साफ सुथरा पानी,
वाह, यहाँ पे मज़े आने वाले हैं स्विमिंग करने के ओपन सी में। वाह, और एजिल ने नहाना शुरू कर दिया है और प्रियंका ने भी उसको ज्वाइन कर लिया है और बीच पे पूरे मज़े होने वाले हैं अभी। ऐसे लुक, पीछे देखो, पीछे देखना।